effort that goes along with it is tremendous. And I'm not saying all these things just because he's a very good colleague and a very good friend, but also as somebody who's been on the other side. Matlab ki a little while ago, there was a little bit of a scare for my dad, and Dr. Talha had attended to my dad. And my dad is somebody who doesn't get impressed very easily. But in my dad's word, he said something which really stuck to me. And he said it in Gujarati, which I will translate it for you. He said कि doctor ने joine अर्धु दुख ने stress दूर થઈ ગયું, which is loosely translated as doctor को देख के ही आधा stress और दुख मेरा दूर हो गया, because he was very worried at that time. So we are so happy to have Dr. Talha with us today. And without any further delay, I would like Dr. Talha to take over and take us through his presentation. Thank you so much for those kind words, Ms. Mezabeen. I don't know if I can do justice with my talk. You really have made my day with all those comments. My focus of the talk today is mainly on, how to maintain a healthy heart and how to maintain a fit cardiovascular system. ठीक है? तो हमारा talk बहुत. Can I just interrupt? We normally do events in a mix of Hindi and English, so if you can sort of mix it up, sure. Translate it on and off so that it becomes more inclusive. तो हमारा फोकस यही टॉपिक पे होगा, एंड मैं जितना हो सके नॉन मेडिकल टर्म्स में सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. अगर आप लोगों को बीच में लगता है कि कुछ चीज नहीं समझ आई है, कोई टर्म नहीं पूरी तरह आपको नहीं क्लियर है कि क्या है वो, तो आप लिख के रखिए. हम एट द एंड ऑफ द टॉक एक क्वेश्चन आंसर सेशन में वी विल एड्रेस जो भी आपके डाउट्स है, वी विल एड्रेस दैट एट द एंड. लेट मी जस्ट प्रोजेक्ट माय स्लाइड्स. Slides are visible? Okay, all right. So as we said, a healthy heart. ठीक है. So this is how a normal healthy heart looks like. ठीक है. हम हमारे माइंड में कैसा वो हार्ट शेप और वो हार्ट शेप इमोजी बनाकर रखे हैं, तो उसका कोई रीजन है. लगभग वैसा हार्ट शेप लगता है वो, अगर आप देखोगी भी तो. जिसने भी वो हार्ट शेप इमोजी या जब भी वो हार्ट शेप बनाया है, वो कोई कारण की वजह से बनाया, तो ऐसा लगता है हार्ट लगभग. ठीक है. अगर उसको हम कार्टून शेप में, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, वी नीड टू नो कि हार्ट नॉर्मली कैसे फंक्शन करता है, हार्ट के अंदर क्या वाल्व्स है, क्या चीजें हैं, वो सब जानना जरूरी है बिफोर वी डिस्कस के क्या गलत हो सकता है हार्ट में, है ना. तो ये हार्ट हमारा नॉर्मल ऐसा रहता है. अगर वो मैंने सेम हार्ट को अगर कट ओपन किया और अंदर से उसका एक कार्टून इम्प्रेशन बनाया, तो ये ऐसे दिखेगा. ठीक है. तो हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 राइट साइड पे, 2 लेफ्ट साइड पे. ठीक है. जो राइट साइडेड, और ये सारे चेम्बर्स के बीच में पर्दे होते हैं या दीवार होती है, और वो सारी दीवारों और पर्दों का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ताकि वो ब्लड मिक्सिंग ना हो. और जब ब्लड मिक्सिंग अगर अलाउ भी कर रहा है तो एक पर्टिकुलर पीरियड में हो, सो दैट हमारा हार्ट नॉर्मली फंक्शन करे. ठीक है. तो हमारे हार्ट में जो राइट साइड का चेम्बर होता है, उसका काम है कि जो भी हमारी शरीर से जो गंदा खून या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हम कहते हैं, वो हमारे पूरे शरीर से राइट साइड हार्ट में आता है. तो ये जो ब्लू वाला जो चेम्बर है, दैट इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट. लेफ्ट वाला रेड वाला जो चेम्बर है, दैट्स द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. सो ये जो बड़े बड़े जो ट्यूब्स दिख रहे हैं, उसको हम वेन्स कहते हैं. वेन्स ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर और डर्टी ब्लड, इफ यू विल, बैक टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट. राइट साइड ऑफ द हार्ट का काम है कि ये ब्लड को वो डायरेक्ट करता है, ये जो ब्लू ट्यूब दिख रहा है, टू द लंग्स में. लंग्स का काम क्या है? लंग्स हमारे ब्लड में ऑक्सीजन डालता है, उसको प्योरीफाई करता है, और दैट प्योर ब्लड देन रिटर्न्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. तो पहले लेफ्ट टॉप चेम्बर में आता है, ये जो होल्स दिख रहे हैं आपको, वहां से लेफ्ट टॉप चेम्बर में आता है, एंड देन लेफ्ट बॉटम चेम्बर में जाता है. ये लेफ्ट बॉटम चेम्बर जो है हमारे हार्ट का, दिस इज द वर्क हॉर्स ऑफ द हार्ट. ओके, दिस इज
दिस इज द मेन पंपिंग चेम्बर ऑफ द हार्ट. हम कहते हैं कि कभी किसको कहते हुए सुना होगा, यार ये पेशेंट को तो हार्ट फेलियर में चले गया. हार्ट फेलियर में चले गया मतलब जनरली ये जो लेफ्ट बॉटम चेम्बर ऑफ द हार्ट है, उसकी जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं. तो ये जो हार्ट लेफ्ट बॉटम चेम्बर ऑफ द हार्ट है, जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, दिस इज द मेन चेम्बर ऑफ द हार्ट दैट पंप्स ब्लड फॉरवर्ड, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉरवर्ड टू ऑल द वाइटल ऑर्गन्स. जो भी हमारे शरीर के अंग है, जैसे कि दूसरे अंग है, जैसे किडनी, लिवर, ब्रेन, हमारी अथड़ियां, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, सबको ये प्योर ऑक्सीजन पहुंचाता है. सो एज यू कैन इमेजिन, जैसे हम सोच सकते हैं, हार्ट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी. ठीक है. ये अगेन दिस इज जस्ट डिस्क्राइबिंग द सर्कुलेशन. राइट साइड पे आता है, वहां से लंग्स को जाता है, लंग्स को जाने के बाद ऑक्सीजन पुअर ब्लड टू द लंग्स, इट रिटर्न्स बैक टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट बॉटम चेम्बर, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन रिच ब्लड goes to the rest of the vital organs via this main blood tube called the aorta. Okay, so this is the lagbhag normal anatomy that everyone needs to know before we talk anything about the cardiovascular system. Now moving on, मुझे 3 मेन इश्यूज पे फोकस करना था ये टॉक पे. अगर हम कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज फोकस करें तो बहुत सारे, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे डिजीजेस अफेक्ट कर सकते हैं हार्ट को और हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को. बट मुझे 3 मेन इश्यूज जो सबसे कॉमन है, एंड हमारे जो आज व्यूअर्स, लिसनर्स जो है, उनके रिलेटेड जो मुझे लगता है मोस्ट कॉमन है, उसको मैं डिस्कस करना चाहता था, उस पर फोकस करना चाहता था. तो वो पहला टॉपिक हम फोकस करेंगे इज हाई ब्लड प्रेशर. इन मेडिकल टर्म्स इट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन. ठीक है. सो हाई ब्लड प्रेशर डिफाइन करने के लिए हमारी जो मेडिकल बुक्स हैं, हमारी जो मेडिकल हम जो ट्रायल्स होते हैं, हमारे जो पेपर्स छपते हैं, उसमें बहुत सारा पिछले दो डेकेड्स में, पिछले 20 साल में काफी ऊपर नीचे डेफिनेशंस हुए हैं. बट टू सिंप्लीफाई इट फॉर अ नॉन मेडिकल पर्सन, अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 और 80, तो ब्लड प्रेशर जब हम नापते हैं, so there is a top number which is the systolic number and there's a bottom number which is the diastolic number. अगर टॉप नंबर 130 से ज्यादा है और नीचे वाला जो नंबर है, डायस्टोलिक नंबर है, जो 80 से ज्यादा है, persistently ज्यादा है, in repeated measurements done in a nice resting position, then we label the person as having hypertension or high blood pressure. सिर्फ एक सिंगल रीडिंग से हम किसी को डायग्नोस नहीं करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के साथ. हम वी नीड टू मेक श्योर के पेशेंट इज इन अ वेल रेस्टेड कंडीशन. ऐसा नहीं कि आप 2 माला चढ़ के झट से आए और मेरे क्लिनिक में बैठे और मैंने ब्लड प्रेशर नापा और आपका ब्लड प्रेशर 150/90 और मैंने बोल दिया नहीं आपको तो हाई ब्लड प्रेशर. ऐसा नहीं होता है. we should confirm that in repeated settings. So this is what is high blood pressure. ठीक है. अभी हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? ये जो भी हाइपरटेंशन और अगली जो और 2 कंडीशंस हैं, ये दोनों के सारे रिस्क फैक्टर्स आप जो देखोगे काफी कनेक्टेड हैं, and majority of them are related to your lifestyle habits. ठीक है. So what things increase your risk of having hypertension? One is being overweight or obese. Dietary habits बहुत 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 कॉमन है. ठीक है. हमारे अभी स्पेशली अभी लास्ट 10-15 सालों में हमारी ईटिंग हैबिट्स, जो हमारी जो नेचुरल, हमारा जो इंडियन कल्चर में जो हम होम फूड खाते थे, उससे दूर दूर जाते हुए वी आर ट्राइंग टू अडेप्ट मोर टू द वेस्टर्न कल्चर. वी आर ईटिंग आउटसाइड मोर, ज्यादा फास्ट फूड हो रहा है. तो ये सारे चीजों में एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो ब्लड प्रेशर को रेज करती है, वो है नमक. ठीक है. तो डाइट में नमक ज्यादा होना इज अ वेरी वेरी बिग रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन. ठीक है. दूसरी थर्ड थिंग इज हेरिडिटरी. देयर आर सर्टेन वेरी रेयर हेरिडिटरी कंडीशंस जो हमारे जीन्स के थ्रू आती है. वेरी रेयर थिंग्स बट दैट कैन हैपन. That can also give you hypertension. And lastly, hormonal imbalances. थायराइड का ऊपर नीचे होना, एड्रेनलिन का ऊपर नीचे होने के वजह से भी और भी
थोड़े बहुत हार्मोन्स होते हैं, रेनिन होता है, एल्डोस्टेरोन होता है, ये सारे एंजाइम्स होते हैं, उसके वजह से भी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जा सकता है। अगर हमने ब्लड प्रेशर को समझो हमने कंट्रोल ही नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा? तो क्या हुआ, मुझे ब्लड प्रेशर है, आई डोंट फील एनी सिम्टम्स। अक्सर पेशेंट्स बोलते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा 150/100 रहता है, डॉक्टर मुझे बोलते हैं दवाई लेने को, बट मैं नहीं लेता। क्यों लेना है? मुझे तो कुछ अलग फीलिंग ही नहीं होता। सो द रिस्क क्या है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के? इफ यू लेट दिस ब्लड प्रेशर गो अनकंट्रोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, eventually it will have bad effects on you and your body. So the most important and the most dreadful things of results of uncontrolled hypertension are stroke। माने जब हमें अपने ब्रेन का सर्कुलेशन या ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, उस वजह से पैरालिसिस हो सकता है, स्पीच में प्रॉब्लम हो सकती है, वो सारी चीजें। सो स्ट्रोक। दूसरा, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन के वजह से हार्ट के ऊपर इतना जोर, इतना प्रेशर पड़ता है दैट द हार्ट, जो पंपिंग, हार्ट एज अ पंप, उसका वो जो मेन फंक्शन है वो भी खो सकते हैं, वो कम हो सकता है। तो उस कंडीशन को, जैसे मैंने आपको बताया था, उसको हार्ट फेलियर कहते हैं। अनकंट्रोल हाइपरटेंशन की वजह से आपका किडनी पर भी असर हो सकता है, किडनी फेल भी हो सकता है। हम काफी पेशेंट्स देखते हैं जिनको कुछ और नहीं, डायबिटीज नहीं, कुछ नहीं, बस अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी फेलियर में गए हैं और डायलिसिस पे। अभी फिलहाल जस्ट yesterday आई वाज सीइंग अ पेशेंट with a rare condition, very young patient, 36-37 year old young patient, जिसको एक हेरिडिटरी कंडीशन है, जिसके वजह से उसका ब्लड प्रेशर बहुत अनकंट्रोल रहता है, और जिस वजह से उसका किडनी फेल हो गया, पिछले 3 महीने से डायलिसिस पे है, और अभी वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ट्राई कर रही है। पर किडनी ट्रांसप्लांट के वर्कअप के वक्त उसको उसका जो ईसीजी और एको हुआ, उस पे एको में पता चला कि उसका हार्ट पंपिंग भी कम है। तो अगेन यू आर सीइंग ऑल द रिस्क, जो भी इफेक्ट्स ऑफ अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर। तो उसका हार्ट पंपिंग, उसके ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के बाद हमने एको रिपीट किया 2-3 महीने बाद, तो उसमें थोड़ा सुधार है। सो ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर शुड नॉट बी टेकन लाइटली। अभी अगर समझो किसको अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, हाउ डू यू मैनेज दैट? The first step in managing blood pressure, uncontrolled blood pressure, is making good lifestyle changes, ठीक है? जिसमें डाइटरी रिस्ट्रिक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन में मेन थिंग इज कट डाउन योर सॉल्ट इनटेक, ठीक है? सो ईटिंग फास्ट फूड, इनवेरिएबली सॉल्ट क्रीप्स इन, वो हमें पता नहीं चलता, बट वो सॉल्ट काफी चीजों में रहता है। सी, एनीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ अ कैन has preservatives in it. Preservatives generally have a lot of salt and sodium component in it. So salt tends to increase your blood pressure, ठीक है? A lot of things जिसमें salt छुपा हुआ रहता है, हमें पता नहीं है। Very common items are bakery items, like khari, toast, the bakery biscuits, cookies, ये सारी चीजों में salt काफी रहता है। The other common things at home which you come across are papad, chutney, achar. These three things, if you have high blood pressure, should in ये सबका intake which should be minimized as much as possible, ठीक है? Normally घर पर खाना जो बनता है, फ्रेश खाना, जो हेल्दी खाना बनता है, वो खाइए आप। खाने के ऊपर नमक एक्स्ट्रा मत डालिए। अगर आप सैलेड खा रहे हो, विच इज रेकमेंडेड, तो सैलेड के ऊपर एक्स्ट्रा चाट मसाला डाल के उसको और अनहेल्दी मत बनाओ। और चाट मसाले में सॉल्ट रहता है, ठीक है? ये दो चीज लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बाद, मतलब हमने वॉकिंग प्रैक्टिस शुरू करी है, वे ट्राइंग टू लूज आवर वेट, हमने डाइटरी फैक्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करी है। डिस्पाइट doing the lifestyle and dietary changes, if the blood pressure remains high, then only we start medications, ठीक है? Now it is important to understand, and I get this question quite a lot, डॉक्टर एक बार medication शुरू किया, is this medication going to be with me for my life? So the answer is yes, most likely yes। अगर एक बार प्रॉपरली हमने ये पूरे पाथवे से डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बाद अगर persistently हाई ब्लड प्रेशर है, तभी मेडिकेशन शुरू किया, सो मेडिकेशंस प्रॉबेबली विल बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जितने हम आगे जाके
ऐसा नहीं कि medication शुरू कर दिया, we stop doing the lifestyle changes and dietary changes. So maybe over a period of years, the medications, maybe the dose may come down, या तो maybe if you're taking 2 medications for your blood pressure, it may come down to 1 medication. So that can happen with good lifestyle changes. You're losing weight, you're really watching your diet. And again, another important thing to understand is that these medications do not cure your blood pressure problem. They are controlling the blood pressure. Hypertension is not curable. There are certain procedures which are still in experimental stages, which claim to cure the hypertension. You may read about it in the papers, but they're still not ready for commercial and prime time use. So for now, what we have and what is available is meant to control your blood pressure, not to cure it. Okay? And as patients who've been through this journey of cancer and the treatment related, I'm sure आप लोगों को ये जो दो चीज हैं, ये दो वर्ड्स हैं, वो उसका अंतर बहुत इंपॉर्टेंट समझता होगा, क्योर एंड कंट्रोल. ठीक है, वो कैंसर जैसी फील्ड में काफी इंपॉर्टेंट है टू नो द डिफरेंस. So the second condition that I wanted to discuss is high cholesterol. Okay, in medical terms it is called hyperlipidemia. ठीक है, again इसके आप अगर risk factors देखोगे, they are quite similar, and I've already mentioned this because ये ज़्यादा से ज़्यादा अभी common हो रहा है. Even in younger age groups, 35-40-year-olds come with very high cholesterol. मेरे खुद के घर पे मेरा एक cousin है who's probably in his late 20s now, who's got a very high cholesterol, and only thing he lives by his own, so only thing he eats is burgers from McDonald's, Burger King, and pizzas. वो खा कर उसका cholesterol is just through the roof now. So, and lack of regular exercise. Diabetes, as we know, India is slowly becoming the diabetes capital of the world. We have, or we may already have, overtaken China in the number of diabetic patients in our country. So diabetes, along with all these bad lifestyle factors, increase your chances of having high cholesterol. ठीक है. Again, cholesterol management में भी same चीज होती है. पहले lifestyle changes, dietary changes. अभी dietary changes में इसमें salt और cholesterol का कोई relation नहीं है. There's no relation between that. But when we're talking about dietary changes from a cholesterol perspective, we're talking about cutting down excess fat and excess carbs जो intake आप करते हो उसको कम करना चाहिए. तो generally, see, I'm not a dietitian, but so I can't tell you कि एक वाटी दाल और आधा वाटी दाल या एक वाटी ये और आधा. मैं आपको ग्रोसली बता सकता हूँ कि क्या चीजें अच्छी है और क्या चीजें बुरी है. So तली हुई चीजें, excessive ghee, excessive oil is definitely not good when you have high cholesterol. ठीक है. After, again, when you have high cholesterol, you want to try all of these things, lifestyle changes, dietary changes. Only after that you need to start medications. Again, the medications here are not a cure for your high cholesterol problems. It is just to control the cholesterol levels. Okay? In the long run, if with good diabetes control, with good dietary changes, the medications may come down. I have actually seen rare patients come completely off these cholesterol medications, where they maybe have a mildly high cholesterol level, and now with good, over a year, good exercise routine, good dietary changes, they have managed to get their diabetes under control, and consequently the cholesterol also gets better. So in those rare instances, we are able to come off these cholesterol medications. Now, diet is a very important thing in all of this. Diet related questions मुझे बहुत आते हैं, and again मैं बोल रहा हूँ कि मैं dietitian नहीं हूँ, but अगर आप simply अगर अपने diet को plan करना चाहते हो and you want it to be healthy for your cardiovascular system, there are two diets that are recommended according to according to the latest sort of medical data out there. One is the Mediterranean diet and the other is the DASH diet. ठीक है. दोनों के principles काफी similar है. And so for instance, if we focus on this Mediterranean diet, so ये ऐसा pyramid है. ठीक है.
जो बेस पे है पिरामिड पे, लोअर हाफ पे है, वो हमें ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए। और जो चीजें ये पिरामिड के टिप पर है, उसको जितना हम कम यूज करें, कम कंज्यूम करें, उतना ज्यादा अच्छा होगा. So if you just focus, it's very common sense things. You don't need to be an expert in anything to understand this. So if you look at the base, so it tells you to be physically active every day, enjoy your meals with others. ठीक है, अभी जैसे डॉक्टर प्रसाद बता रहे थे, हमारे हॉस्पिटल में वी आर नॉट एबल टू एंजॉय आर लंचेस एनी मोर बिकॉज थैंक्स टू कोविड. वो जो पहले एक टेबल पे 4 लोग बैठ रहे थे, अभी एक ही लोग बैठ रहे, तो ऐसे वो दूर दूर से सबको हाई और बाय हो जाता है. सो वी आर नॉट एबल टू डू दैट, बट वी शुड ट्राई टू बी फिजिकली एक्टिव. Then the next thing, if you look at the next base of the pyramid, is your each of your meals should and every day should be based around these foods. So इसमें क्या क्या है? इसमें vegetable है, whole grains है, beans, nuts, seeds, herbs, ये सारी चीजें हैं. ठीक है, सो ये इस पर ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए. साथ ही साथ यहाँ पर बेस में यहाँ पर वाटर भी है. मेंटेनिंग गुड हाइड्रेशन लेवल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके ऊपर एक लेवल आता है where you see fish and seafood. So every day is not something that will be healthy. If you want it to be healthy, at least twice each week is good enough. फिर उसके ऊपर आता है poultry, eggs, cheese and yogurt. An egg a day or maybe 2 eggs a day is okay, but nothing excessive. और फिर उसके ऊपर सबसे अनहेल्दी जो चीज है उसके टिप में है रेड मीट्स एंड स्वीट्स. ठीक है, सो अवॉइड दैट. Alcohol is a very very important question I get asked about. So anything in moderation is okay. The most healthy from a cardiovascular standpoint, wine, अगर आप मुझे पूछे तो wine, especially red wine, उसमें थोड़े antioxidant effects होते हैं. They are healthy. Maybe 1 or 2 glasses of wine in a week is what is recommended to be a healthy level. Again, each patient, each individual metabolizes or handles alcohol differently. But अगर आप average population, Indian population को देखोगे, so the recommendation is 1 to 2 glasses of red wine is healthy. Beer and scotch, whiskey, the other things are not considered as healthy for the cardiovascular system. Okay, so I'll skip this next slide. It basically is boils down to the same thing as the Mediterranean diet. Okay, now the third important condition I wanted to discuss is heart attack. ठीक है, अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं है, यू आर सर्टेनली एट एन इंक्रीज रिस्क फॉर हैविंग हार्ट अटैक्स. There are certain and I don't mean to scare anyone here, हमारे listeners को, but there are certain cancer treating agents, chemotherapeutic agents which can predispose you to having heart attacks, which can predispose you to having heart failure, जहाँ पर वो heart का pumping कम होता है. There are certain patients जहाँ पर जिनको radiation therapy मिलता है, especially radiation of the chest area. और उनको अगर हार्ट पर रेडिएशन मिला है तो हमारी जो हार्ट की जो नसें हैं, जो coronary arteries हैं, उसमें blockages का जो प्रोसेस है, जो प्लाक डेवलपमेंट है, वो ज़्यादा तेज होता है. तो वो सारी थोड़ी रेयर आपके कंडीशन के लिए एप्लीकेबल ये चीज़ें जो है वो थोड़ा ज़्यादा कॉमन हो सकती है. But again, it's not that it's uncommon. We see heart attacks everywhere. All age groups are being affected by it. So whenever someone's having a heart attack, in medical terms, it's called an acute coronary syndrome. It's a race against time. I'll tell you why exactly in a couple of slides. Okay. So it is one of the most common reasons for death in the Western world right now. So हमने हमारे हार्ट को अंदर से देख लिया है. हमने वो जो कार्टून बताए थे हमारे फर्स्ट 2 स्लाइड्स में. Now, if you look at the heart from the outside, there are all these ये जो red एकदम फाइन जो blood vessels दिख रहे हैं आपको, they are called the coronary arteries. They basically supply oxygen rich clean blood
to the heart muscle. ठीक है, हार्ट भी एक मसल है, तो उसको काम करने के लिए ऑक्सीजन लगेगा, उसको न्यूट्रिशन, उसका खाना पीना, ऑक्सीजन लगेगा. अगर वो नहीं रहेगा तो वो वापस फेल हो जाएगा. सो वो मसल तक प्योर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ये सारे ब्लड वेसल्स, ये सारे नसें हैं जिसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं. अगर ये कोरोनरी आर्टरी को आप एकदम मैग्निफाइड व्यू माइक्रोस्कोप के अंदर खोलकर देखो, तो ये ऐसा नॉर्मल आर्टरी वॉल ऐसा दिखता है, एकदम स्मूथ रहता है. और ये जो अंदर रेड डिस्क दिख रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्लड. जो ब्लड के सेल्स हैं वो अंदर से क्रॉस हो रहे हैं. तो नॉर्मल ब्लड वेसल में बिना कोई रुकावट, बिना कोई टोक टोक, एकदम हम जो बोलते हैं स्मूथ लैमिनर ब्लड फ्लो होता है हमारे ब्लड वेसल्स में. जब भी हार्ट में प्लाक बिल्डअप होता है, अनकंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ये सारे रिस्क फैक्टर्स के वजह से, स्मोकिंग, ये सारे रिस्क फैक्टर्स के वजह से जब प्लाक बिल्डअप होता है, तो ये जो सेम ब्लड वेसल हैं, ये जो कोरोनरी आर्टरी है, इसमें देखिए कैसे अभी ये ब्लॉकेज आ गया है. ये जो येलो पार्ट है ये पूरा प्लाक है, और इसमें आप देख सकते हो कि कैसे ये ब्लॉकेज आ गया है अभी. और ये ब्लड वेसल्स, जो ब्लड सेल्स हैं, उसको यहाँ पर दिक्कत हो रही है. देयर इज सम काइंड ऑफ हिंड्रेंस फॉर द ब्लड टू पास थ्रू. सो obviously the amount of oxygen and other nutrients that need to reach the heart muscle is impaired. So over the long term, this is not good for the heart, obviously. Now, heart attack happens when I hopefully it's there. Yeah. So heart attack happens when the blood flow to that muscle is completely blocked. पूरा 100% ब्लॉक हो जाता है, तभी जो हार्ट मसल, सो समझो अगर ये जो ब्लड वेसल है यहाँ पर ब्लॉक हुआ है, तो ये जो डाउनस्ट्रीम जो हार्ट मसल है, इसको कुछ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कोई ब्लड ही नहीं मिलता. सो विद इन अ फ्यू मिनट्स इट स्टार्ट्स डाइंग. सो व्हेन दैट मसल डाइज, इट स्क्रीम्स फॉर पेन. सो दैट इज व्हाट यू हैव दैट पेन जो हार्ट अटैक में होता है. चेस्ट पकड़ के लोग बैठ जाते हैं, भारीपन लगता है, दबाव लगता है, वो सारा ये डाइंग मसल के वजह से हो रहा है. इट्स स्क्रीमिंग फॉर पेन, इट इज टेलिंग यू दैट boss, where is my food, I need more nutrition. Okay, so that is what a heart attack has. So risk factors हमने काफी कुछ already discuss किया है. Things that we haven't discussed is smoking. Cigarette smoking, not only a big risk factor for lung cancers in addition to other cancers, but also very very commonly implicated in heart related issues, especially these heart attacks. A lot of young smokers now have developed blockages because of smoking. So smoking, hereditary, advanced age, diabetes, obesity, and inactive lifestyle, they're very, very common risk factors for having blockages in the blood vessel of the heart. क्लासिकल हार्ट अटैक्स के सिम्टम्स मैंने आपको बताया, चेस्ट पेन, चेस्ट प्रेशर, ऐसा लगेगा कि किसी ने वजन डाल दिया है, कोई हाथी बैठ गया है छाती पे, दबाव, भारीपन. You tend to have palpitations. A lot of patients have sudden onset sweating, मतलब इतना पसीना छूटता है जैसे पूरे कपड़े भीग जाएं, ऐसा. So these are very very concerning signs. A lot of patients, especially diabetics and females, they tend to hide these classical heart attack symptoms. उनको for some reason ये जो classical chest pain, chest pressure नहीं होता, काफी बार silent होता है, या तो काफी बार very atypical symptoms. They have a lot of times they have very atypical symptoms like nausea, acidity, vomiting. So if you have persistent nausea, acidity, vomiting which has lasted for 6 to 8 hours, then maybe you should go and आपने सारे आपकी home remedies try कर ली हो, आपने आपका एंटासिड ले लिया, जेलुसोल ले लिया, सब ले लिया, और ये जा ही नहीं रहा. सो यू डोंट सिट विथ इट एट होम, सर्टेनली डोंट स्लीप विथ इट. Talk to a physician. I would suggest go see a physician, and don't ignore these things. So these are classical heart attack symptoms. Now what can you do if someone's having a heart attack? Say you're at home, or you're in your work environment, you're at your office, and someone's having a heart attack, and you immediately are concerned about that. So first thing what you do is you call an ambulance, or you take, if ambulance, हमारे यहाँ पर तो थोड़ा with all the construction going on in Mumbai, ambulances reaching the right place at the right time is difficult. So sometimes it may be more easier or more quicker that you pick up the patient, you take them to the nearest hospital or casualty. ठीक है, that should be the main thing.
call for medical assistance. Don't try to handle this on your own, especially if you're alone at home with your loved one. Do not try to handle this alone. Try to get some help. Okay, you cannot manage this on your own. अगर आपके घर पे डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन, एस्प्रिन कोई आप ले रहे हो या घर पे डिस्प्रिन पड़ा है फॉर सम अदर रीजन, यू कैन गिव इट टू देम. ठीक है. And after this, there is nothing more you can do. Uske baad, you just relax, you take the patients there and let the doctors take over. Okay, you hope and pray that the best things happen to your loved one. Now, I said that it's a race against time. जब मैंने कहा जिसको हार्ट अटैक आ रहा है, सो व्हाई इज दैट? बिकॉज ये ऐसा हमने देखा है हमारे मेडिकल स्टडीज में, दैट एवरी 30 minutes डिले from symptom onset to angioplasty, meaning opening the blockage, increases the patient's risk of dying by 7.5%. So हम बोलते हैं टाइम इज मसल, मीनिंग जितना जल्दी हो सके उतना कम मसल डैमेज हमें रखना है, मसल डैमेज हमें प्रिवेंट करना है. ठीक है. तो अभी अगर किसको हार्ट अटैक हो रहा है तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं, मैं आपको ये बिल्कुल एक नॉन मेडिकल टर्म्स में बताऊंगा. एक ऑप्शन है कि हम क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशन यूज करें. मैंने कहा था कि उधर क्लॉट जम जाता है, तो उसको पूरी तरह तोड़ने के लिए, क्लॉट को तोड़ने के लिए थोड़ी स्पेशल दवाइयां होती है, वो यूज कर सकते हैं. या तो दूसरा, एंड दिस इज द मच बेटर एंड मेडिकली प्रिफर्ड ऑप्शन, इज एंजियोप्लास्टी करना. एंजियोप्लास्टी में क्या होता है? एंजियोप्लास्टी में हम अंदर ये जो आपकी जो नस जहां पर ये प्लाक हो गया है, हम अंदर एक बलून डाल के पहले इसको, ये ब्लॉकेज को ओपन करते हैं. ठीक है. अगर उसमें कैल्शियम बिल्डअप है, ब्लॉकेज सख्त हो गया है, तो हम उसको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से उसको मिनी, ये ऐसा एक मिनी ड्रिल है, उसको ड्रिल करके वी मेक वे फॉर द ब्लड फ्लो. अभी एक बार हमने उसको बलून किया या ड्रिल किया या बर किया है, द टेंडेंसी ऑफ द ब्लड वेसल इज टू अगेन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. सो टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग, वो ब्लड वेसल को खुला रखने के लिए वी यूज अ स्टेंट. ठीक है. तो हम एंजियोप्लास्टी करके इवेंचुअली वी पुट इन अ स्टेंट. ये स्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months becomes a natural part of your blood vessel. पर ये स्टेंट को खुला रखने के लिए हमें फिर उसके बाद ब्लड थिनर्स लेनी होती है, एटलीस्ट फॉर 1 year. ठीक है. So this is the most preferred option for having, if you are having a heart attack, in terms of how to treat that patient. So the other option I talked about was using clot busting medications. Now, unfortunately, if you have multiple blockages, there are multiple blockages, or there are blockages in certain critical states जहाँ पर हमारा angioplasty stent जा ही नहीं सकता. So in those cases we do a bypass surgery, जहाँ पर chest open करके ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी करते हैं. दिस इज अनदर ऑप्शन फॉर एक्सट्रीम्स ऑफ केसेस. पर अगर सिंगल ब्लॉकेजेस होते हैं, सो दे वी वर एबल टू टेक केयर ऑफ इट विदाउट अ सर्जरी, जस्ट विद द हेल्प ऑफ द एंजियोप्लास्टी. ठीक है. Again, same things I'm repeating again: eat healthy, get active, make sure you're controlling your weight, and every so often see your physician or doctor. ठीक है. So just last 2 slides to conclude. Hypertension, high cholesterol, and coronary disease are common cardiovascular ailments. Some chemotherapy agents and radiation therapy can predispose to above conditions. Majority of these conditions can be controlled by lifestyle changes. Medications help to control these conditions, but they are not cure for these conditions. Okay. And more importantly, if left untreated, these conditions can lead to heart attacks, heart failure, stroke, and kidney failure. That's all. Thank you. Thank you very much, Dr. Tala, for that wonderful presentation. And, even I didn't know so many of these things. And it's always lovely to learn from the experts. So I'm sure काफ़ी लोगों को काफ़ी सवाल होंगे डॉक्टर ताला ने जो बताया है उसके बारे में. सो लेट्स हैव द क्वेश्चंस कमिंग इन. मीनवाइल मैंने क्या किया है कि डॉक्टर ताला ने जो हमें टिप्स दी हैं वो सारी टाइप करके हमारे ग्रुप पे डाल दी है. सो एवरीबडी हैज़ एक्सेस टू दैट, एंड प्लस यूट्यूब लिंक मैं बाद में सबके साथ शेयर कर लूँगा. सो डज एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस?
Hi, Hi, Vidyaprabha. good afternoon, Vidya. So, my career said that certain drugs of chemotherapy and radiations can have an effect on the heart. So, is there any time period that after how much years or how many months it can appear, or it is like during the course of treatment only the effect will be there, or after the treatment also it can affect? So generally, if you are on any of these agents, your oncologist or your treating physician will recommend कि आप जब ये ट्रीटमेंट ले रहे हो आपके सीरियल एकोकार्डियोग्राम सीरियल ईसीजीज होते रहेंगे, ठीक है. सो दैट इज, एंड अगर उसमें थोड़ी भी चेंजेस लगती है, सो अस एज कार्डियोलॉजिस्ट वी इमीडिएटली नोटिफाई द ऑन्कोलॉजिस्ट और उनको हम बता देते कि नहीं, इसमें थोड़ा हमें बदलाव लग रहा है, मे बी यू शुड रिड्यूस द डोज, मे बी यू शुड consider alternative agents. जो timeline है, it differs widely based on the kind of agents that are being used. थोड़े की का जो there are some chemotherapeutic agents which tend to cause heart pumping weakness. उनका effect, if you use a high dose upfront, you will see it within 2-3 months. Whereas if you think about, when I said radiation exposure की वजह से जो coronary disease वो heart के नसों में blockages होता है, that's more of a long term effect, maybe 10-15 years down the line. It also has to do with what your underlying substrate is. मतलब, are you a 30-year-old person with no cholesterol, no smoking, no diabetes, or you are a 65-year-old person who smoked all his life or and has diabetes. So वो जो 65-year-old है उसमें थोड़ा वो रिस्क ज्यादा होगा, and it's definitely more एक थोड़े कुछ सालों बाद वो देखने मिलता है जो रेडिएशन थेरेपी का इफेक्ट है. काफी बार हमने काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, सो आई एक्चुअली deal a lot with heart failure and heart transplant cases. So I think over the last 4 to 5 years, I have seen at least 3 to 4 kids who've had बच्चे जो very young age, they've had, say, in the first between 5 to 10 years they were diagnosed with this particular tumor, and because of which the tumor was removed and they got chemotherapy. And say when they were 17, 18, or maybe roughly around 20 years of old age, they were diagnosed with heart failure. And so itna bada gap tha between them receiving that chemotherapy agent and then manifesting with heart failure. But मैंने ये सारे 4-5 केसेस में ये सेम ट्यूमर था, सेम कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट एंड सेम इफेक्ट दैट आई एम सीइंग. ये सारे केसेस में मैंने आई हैव ट्राइड टू सी अगर कोई और रीजन है ये हार्ट फेलियर होने का, बट आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग. सो इट कुड बी, इट्स वेरिएबल डिपेंडिंग के कौन से एजेंट से हम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. Vidyaprabha, I want to just chip in here. I'm sure all of you would remember every time I keep insisting about overall health. Keep walking, keep exercising, stop smoking, no alcohol, and this is the reason by because we have to look at the long term gains. So suppose if somebody has received radiation to the heart, we don't want them to have other problems also, because they will have not an additive effect but a multiplicative effect. And Sure. the technology now has changed so much that we are able to reduce the dose received by the heart to a very large extent. So if you look at breast cancer patients को जो treatment दिया जाता था, जो 70s and 80s में left breast cancer patients को radiation का इलाज मिला है, उनमें इनफैक्ट देखा गया है कि सर्वाइवल थोड़ा कम है अगर रेडिएशन मिला है तो. And that is because they were dying of heart attacks and heart failures. But now some of you who would have taken radiation here, we know that हम लोग हमारे यहाँ पे we run a special program for patients where we use a technique called deep inspiratory breath hold radiotherapy, or DIBH, where the dose of heart is significantly low, so it's very very safe. So we all have to use the latest technology. So we are doing our bit by using latest technology, the most advanced medications and everything, but you also have to do your bit
of having a healthy lifestyle. Just taking the best treatment is not going to work. Having the best lifestyle is also required in addition. Yeah, sure. So it again depends upon the right side or the left side you receive the therapy. Okay, thank you. Thank you so much. Anyone else who has questions? Amiji has written a question in the comment. Yeah. So Amitji has asked how much of left ventricular ejection fraction is considered as normal after chemotherapy and radiation about the age of 60. So there is no cutoff in the left so for everyone else who are not familiar, left ventricular ejection fraction is a number that we look at, and where we are trying to quantitate how well the heart is functioning. तो एक परसेंटेज नंबर होता है जो कि जिसको नॉर्मल हम 55% एंड अबव इज नॉर्मल, ठीक है. 100% is not normal. We don't want the heart to be 100% ejection fraction. That is also not compatible with life, ठीक है. We want it to be 55% and above, ठीक है. And so that is what the cutoff is, and that is what is normal. Fortunately, एज के वजह से वो कट ऑफ्स नहीं वेरी होते हैं, और या तो अगर कीमोथेरेपी रेडिएशन दिया है तो भी वो कट ऑफ्स वेरी नहीं होते. द नॉर्मल कट ऑफ इज स्टिल 55% and above. And Amitji, we also track them. Like Dr. Tala was mentioning that there are certain drugs we know that will cause damage to the heart. So, for example, a breast cancer lady is receiving trastuzumab. We will be doing her 2D echo and ECG every third cycle, because it can show a drop. Patients with left breast cancer radiotherapy, we ask them to do a 2D echo and ECG every 6 monthly. So you also need to see how things are changing. We have another question from Ms. Rahila Khan. Is chemotherapy a good or so? Rahila, this question is a little open-ended. कि कीमोथेरेपी अच्छा है या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी ट्रीटमेंट, कौन से कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं. कोई भी ट्रीटमेंट हम सजेस्ट करते हैं उसमें हमेशा हम देखते हैं कि ये ट्रीटमेंट लेने से फ़ायदा कितना होगा और नुकसान कितना होगा, और दोनों को हमें कंपेयर करके फिर एक डिसीजन लेना होता है. सो दैट वे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड. And Smita Paranspe is saying oats as breakfast has reduced my weight and fat amazingly. Dr. Tala, do you have any comments on this thing? And I want to tag in another question along with that. What's your opinion about the fat diets, intermittent fasting and keto and all of those? I don't know. To be very honest, I really don't know. मेरा पहला ऐसा position था that I would say that these fat diets are not right. But abhi now I've personally seen a lot of patients and a lot of family members try these different diets and who've benefited. I still am reserving my judgment till I see them, maybe 2-3 years down the line. What I tell people is whatever changes you do should be sustainable. Unfortunately people often do these एकदम क्रैश डाइट्स के पूरा दिन मैं कुछ नहीं खाऊंगा और रात में बस ये वाला जूस पीकर सो जाऊंगा, वो वैसा वाला दे आर नॉट सस्टेनेबल. आप 1 महीना 2 महीना चलो 6 महीना कर लोगे, उससे ज्यादा नहीं होगा. और जब आप बंद करोगे वो डाइट, you are going to gain back all the weight that you had lost and plus more. I can assure you of that. So whatever you do should be sustainable. ठीक है. There is some science to intermittent fasting. But I am not terribly convinced yet. I need to see the long-term results. Okay. Dr. Tala, I also had one question कि अभी हम देखें हमारे सारे मोबाइल फोन्स में वो गूगल फिट ऐप रहता है, उस पर आप एक टारगेट रखो एंड दिस गोल ऑफ 10,000 स्टेप्स अ डे. तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि वो कितना साइंटिफिक है, या शुड वी वर्क फॉर 10,000 या उससे ज्यादा करना चाहिए, क्या है? So what I in terms of so basically वो जो steps हैं वो हमें बता रहे हैं कि आपने एक quantity दे रहा है, roughly
अगर समझो किसी को मैसेज देना है कि कितना एक्सरसाइज करना है, तो रफली वो एक क्वांटिटी दे रहा है. तो बॉल पार्क रेंज, या यू शुड एम फॉर एटलीस्ट 10,000 steps. But if you can comfortably do more, you should be able, you should not limit yourself to 10,000 steps. 10,000 steps is a decent target. It's not very easy, mind you, especially if we are busy at work. Dr. Prasad, it's not easy to get 10,000 steps. I can't. Most of the days I can't. So it is challenging, but काफी scenarios में you can actually do more. What I tell the patients is, आप जब walk ले रहे हो, मेक श्योर यू आर नॉट वॉकिंग के एकदम ही हम बगीचे में टहल रहे हैं करते हैं, वैसा वैसा नहीं करना है. Focus on the fact that you are walking for exercise. You should feel your pulse rate go up a little bit. Okay, it should not be कि आपका pulse rate वही same हो रहा है. That is not enough exercise. It should not be excessively high कि you feel that your heart is jumping out of your chest, but try to feel that thoda heart rate upar ja raha hai, you're working out a little bit of sweat, and try to maintain that level for at least 15 to 20 minutes to start with. Okay, if you are starting out a routine, then over a period of 2 to 3 weeks you can add 5 minutes. And if at the end, say by 3-4 months, if you are able to reach that level of exercise and sustain it for 30 minutes a day, at least 6 times a week, that is good enough for your cardiovascular health. And उस बीच अगर आपके कितने भी steps हो रहे हैं, if that is 10,000 steps, or if that's 15,000, or if that's 8,000, I think that's good enough for you. Disha has one question. Yeah, so Disha, that is exactly what Dr. Tala Right. said. 10,000 is the minimum that we should aim at. Any other questions from anyone else? Sir, define kilometer to walk rather than steps. How much walking should be done in terms of kilometer, not in terms of steps? देखिए, सबका किलोमीटर टारगेट अलग होगा. आप एकदम सिंपल रखिए, अमित जी, आप एकदम सिंपल आपके दिमाग में रखिए कि समझिए अगर मुझे अगर घुटनों में कोई प्रॉब्लम है, मैं उतने किलोमीटर नहीं चल पाऊंगा. तो हाँ, तो यू हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट. जो मैं बेसिक आपको कह रहा हूँ, ट्राई टू फोकस ऑन कि आपको लगना चाहिए कि मेरा थोड़ा हार्ट रेट बढ़ा है, एंड स्लोली उसको बिल्डअप करना है. किलोमीटर्स और उसका कोई रिकमेंडेशन नहीं है. अच्छा, ओके. बिकॉज ये बहुत सारी चीजों के ऊपर निर्भर करता है ना. इट्स नॉट जस्ट वन थिंग. अगर किसी को वॉकिंग में प्रॉब्लम है, इफ नीज में इश्यूज है, हिप्स में इश्यूज है, बैक में इशू है, ऑल ऑफ दीज कैन अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस दैट यू कवर. Okay, thank you, sir. Sure. So there's one question in the comments which says that I have a mitral valve prolapse from a young age. How risky is it now to undergo cancer treatment? So mitral valve prolapse is actually a lot of the times overdiagnosed in our country. It is a common problem, but even having said that, it is overdiagnosed. Mitral valve prolapse per se by itself should not be a contraindication for starting any chemotherapy. अगर mitral valve prolapse के वजह से valve leakage बहुत ज्यादा है, mitral valve में leakage बहुत ज्यादा है, जिस वजह से हार्ट में सूजन आ रही है या हार्ट का पंपिंग कम हो रहा है, then that may be a problem for chemotherapy. But majority of the cases of mitral valve prolapse that come across in our clinic, they have minimal leakage, or we tend to follow them up serially with serial echoes, maybe every 2 years, every 3 years, ऐसे करके. And Smita ji, if a patient specifically gives a history कि अगर किसी ने हमें कहा कि नहीं हमें हार्ट का प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर या अदर कोई इश्यूज है, व्हाट वी जनरली डू बिफोर स्टार्टिंग रेडिएशन या कीमो, कि हम उनको बोलते हैं कि आप आपके कार्डियोलॉजिस्ट को एक बार जाके मिलिए और हम उनको लिख के देते हैं कि ये ट्रीटमेंट प्लान्ड है. सो टेक द कार्डियोलॉजिस्ट व्यू. मे बी द कार्डियोलॉजिस्ट विल चेंज द मेडिकेशंस अ लिटिल बिट, या वी मे नीड अ लिटिल क्लोजर फॉलो अप. तो वो देखना पड़ता है कि काफ़ी बार लोग क्या सोचते हैं
कि नहीं मेरा हार्ट का प्रॉब्लम है तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा, मुझे कैंसर का है तो मैं कैंसर के डॉक्टर के पास जाऊंगा, या मुझे लंग का प्रॉब्लम है मैं लंग स्पेशलिस्ट के पास जाऊंगा. एंड दे डोंट टेल अस दैट दे आर मीटिंग ऑल दिस डॉक्टर्स, एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. हमारा जो शरीर है, और नॉट जस्ट शरीर, हमारा शरीर और दिमाग मन ये सारा एक ही है. तो अगर एक जगह पे कोई प्रॉब्लम है तो उसका असर दूसरे जगह पे भी पड़ता है. तो वी हैव टू लुक एट इट एज अ होलिस्टिक मैनेजमेंट, एज Mezzabin was saying, that we have to look after the whole of the patient. I always say that I don't treat cancers, I treat my patients, and that patient is a whole patient, so I have to look at the whole of the patient. So when you go to a doctor, if you have a problem, always come up with that information and share that information. I think we are coming close to the end of the meeting. Dr. Tala, thank you very much for this wonderful presentation. I will share the YouTube link with all of you very soon, and I hope we actually land up doing these things that Dr. Tala mentioned, of having less salt, eating healthy, exercising without excuses, and leading otherwise happy and healthy life. Okay, any last minute comments or questions from anyone? Excellent. Mezzabin, what are we doing next month? So next month we have decided that we're going to have our participants talk to us. We're going to invite some of our participants to come and talk, because hum to baat karte hi rehte hain. So we want them to share their experiences. We want them to have a conversation with all of us put together. So we are making a panel out of some of the selected participants, and they will be sharing their own experiences and what worked for them, what didn't work from them. And we're going to have a conversation on that. So that's the idea for the next month. Wonderful. So हम लोग आपको closer to the day of the meeting वापस इसके details सारे भेज देंगे. If you're not on the WhatsApp group and you want to get added, message Mezzabin or me and we'll add you onto the group, and we'll see you soon. Take care. Be safe. Thank you, very sir. much, Dr. Tala, again. Thank you so welcome. much, You're Dr. welcome. Tala. Take care, everyone. See you. Thanks. It was Thank fun.